If Okay. this is the P4 category, right? Let me highlight it. This is P4. Example of P4. Single user. Okay, this is for single user. Now P5, I have already discussed. Suppose a software to be installed in a 10 member or 15 member in an organization. Suppose a department of finance or any other department like HR department. They need any application to be installed in the 10 members or 15 members. In that case, they have to raise a request in a P5 category. Understand? Yes, Raj, sir. is it clear? Raj, is it clear? Yes. Okay. Now, we have completed this incident part, incident management part, right? Now, curiously, from first day, you are wanted to know OST, right? Now, I am explaining you what is OST and what is PST. देखो, आप लोग डेफिनेशन कहीं से भी इंटरनेट से कहीं से भी किसी किताब से ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, यू कैन गेट अ डेफिनेशन, बट यू शुड अंडरस्टैंड इट, होता क्या है, राइट? ओएसटी पीएसटी होता क्या है? फर्स्ट यू डोंट go for the what I am saying, डेफिनेशन. डेफिनेशन पे नहीं जाना है, मगअप नहीं करना है कोई भी चीज को. इफ यू I just read it, and once the interviewer asks me, I will just tell them. In that in between, if they ask any question, you will get stuck. So you need to understand it, okay, clearly. Now, what is OST and what is PST? So, how many of you have configure Outlook during Outlook classes? जब आउटलुक पढ़ाया गया, कितनों ने आउटलुक कॉन्फ़िगर किया? वन, भास्कर, एनीवन? Yes, sir. Lake? Okay, Yes, sir. okay. Raise your hand. I want to see Preeti, Gajanan, Akshay, Mukul, Vikram, Nitish from Noida, Satish, okay, Raj, almost everyone. So those who are not configured, then they will not understand it clearly. Okay, but I will try my best to understand, give you a exact picture what is the OST and what is the PST. Okay. Okay, stop raising your hand. I understand everyone, almost everyone has. So I am giving you a one practical scenario. Suppose this is a exchange. So PST is minimap. That is a very old one. Okay. Now you will go to the organization. You will learn this POP and IMAP, revise it, learn it. But if you go to the organization, you will get a exchange. Most of the organization, you will get a exchange or a cloud O360. O360. So suppose this is my exchange server. Okay.
and there is a user. Here is a user one, and another user is here in organization. Another user is here. So this is a Tom. This is a Sam. This is a Roy. So these are the three members, and Tom want to send a mail to a Roy. Okay, the Outlook is configured. Mail is configured in Tom, Roy, and Sam. Okay, so while configuring a mail in a Tom, Sam, and a Roy, in that case, .ost file is created. Once I will complete, is my screen visible? दिख रहा है आप लोगों Yes, को sir. स्क्रीन जो मैंने Yes, डायग्राम बनाया yes, sir. Visible. Your screen is visible, sir. ओके ओके वेट डोंट इंटरप्ट इन बिटवीन मैं पढ़ा रहा हूँ अभी जो मैं ये क्लियर कर दूंगा उसके बाद आप क्वेश्चन करना मेरे से मैंने उस दिन इसीलिए नहीं बताया था क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने में एक्सप्लेन करूंगा तभी समझ में आएगा थ्योरी लिखाने से कुछ नहीं आएगा थ्योरी लिखाऊंगा फिर आप लोग याद करोगे फिर वहीं पे रहोगे जिस लेवल पे थे उसी लेवल पे रहोगे ठीक है तो अगर आप इसको समझोगे तो हो सकता है कि आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए so while creating a outlook without any mail no mail is there but ost file is created just like I am showing one example to you suppose I am see I'm sharing my main screen see suppose I am opening an excel file and I haven't put anything on excel file but if I want to save it I can save as and it will save with which extension if I want to save it in a so here is an extension multiple extension which extension I want to save it excel here is also excel xml spreadsheet excel right so whatever is suitable for me I can save it just like that in Outlook, there is a two extension file. Okay, one is a OST and the other is a PST dot PST. So if I save this file, I haven't put anything, but I have to put the extension, right? So while creating a mail with a exchange, it will directly create it in a PST OST form. Okay. If I don't want to save as I simply just want to save it in a desktop, then you can save. So you will get the extension key. But if you have no idea which extension you want, it by default it came XLSX. Just like that, while you are creating, I will explain it OST again later. I am just giving you overview. बीच में interrupt नहीं करना पहले से. तो OST file create होता है, right? So every guys have a Outlook in this system, and everybody has the OST. Okay, dot OST. Dot OST. And suppose Tom send a mail, one mail send to a Roy. So what happened? The mail will first go to the exchange. It is stored in exchange
and from that exchange it came to the road system. Okay, so that mail is stored in a exchange. So the mail is on the exchange also, on a Tom system also, and a Roy system also. If you are disconnected, if Roy read that mail, Tom send it, it is on exchange, it is on a Roy. So the mail is on a OST. Okay. If Tom disconnect the internet, then also he will able to see a mail. If Roy disconnect the internet, Roy is also able to see a mail in Outlook only, right? In Outlook only, because the mail is already downloaded. Now, this is the scenario of a OST. The mail is on a exchange and on your system also. But you can't move OST file to the other system. Suppose Sam wants that mail and your ID is deleted or you are not able to connect with the internet, then Tom asks you, अरे वो मेल मुझे ऐसे ही ट्रांसफर कर दो ना, नेट नहीं है तो क्या हुआ, लैन कनेक्ट करके मुझे दे दो, लैन टू लैन कनेक्शन करके मुझे दे दो. ओके, और या तो आप शेयर फोल्डर पे डाल दो, मैं शेयर फोल्डर से एक्सेस कर लूं. पूरा ओएसटी फाइल बोला सैम कि आपके जितने भी मेल्स है आप एक्सचेंज पे शेयर फोल्डर पे डाल दो और मैं एक्सचेंज में ले लूंगा. तो इन ओएसटी यू कांट डू दिस, you can't share your OST file to the SAM, and SAM is not. Please guys, please mute. So the SAM will not able to access this OST file in his Outlook. If Sam asks Roy, please send me that OST, then Roy can send it, but it will not send. OST move nahi hota. First point, right. OST can't move from one system to another system. Okay? अब देखो, अब ये OST था, मेल आपका टॉम का जो भी मेल था एक्सचेंज पे है, रॉय का जो भी मेल है वो भी एक्सचेंज पे है, सैम का जो भी मेल है वो भी एक्सचेंज पे है. नाउ व्हाट ही वांट टॉम और रॉय. अब क्या हुआ कि टॉम का जो यहाँ पे मेल बॉक्स का साइज दिया था, ओके, वो फुल हो गया, क्योंकि सर्वर पे हम कुछ का साइज दे सकते हैं. सपोज देयर इज एन 1 GB, okay, there is an 1 GB of space on exchange. अब 1 ही GB का स्पेस है एक्सचेंज पे आउटलुक का, आपके मेल का. तो जब ये 1 GB फुल हो गया टॉम का, then Tom will not receive the new mail from anybody because his inbox is full. In that case, what Tom will do? अब क्या करेगा टॉम? उसको नया मेल्स दिख नहीं रहे हैं, वो मेल्स क्या हो गए, उसके बंद हो गए. क्यों? क्योंकि उसका मेल बॉक्स का जो साइज था वो फुल हो गया. और मेल बॉक्स का साइज कहाँ होता है? सर्वर पे. तो सर्वर पे जो मेल बॉक्स का साइज था, गाइस प्लीज म्यूट, मैं आप लोगों को टाइम दूं क्वेश्चन पूछने के लिए. लेट मी फिनिश दिस. इतना अच्छे से इतना डायग्राम बना के कोई नहीं समझाएगा आपको. आप नेट पे भी जाओगे तो भी नहीं मिलेगा आपको, कहीं पे भी चले जाओ, ये एग्जाम्पल ऐसा एग्जाम्पल लेके नहीं समझाएगा आप. ठीक है, समझ लो, एक बार समझा दूंगा, कभी नहीं भूलोगे लाइफ में. ठीक है. सो मेल बॉक्स
is full on the exchange, right? 1 GB mail is already kept on the exchange. Now what? अब टॉम को मेल नहीं आ रहे, तो अब टॉम क्या करेगा, उस मेल को अपने पर्सनल लैपटॉप में डाउनलोड कर लेगा और वहां से स्पेस खाली करना पड़ेगा, राइट? दो ऑप्शन है, या तो आप डिलीट कर दो सारे मेल, या तो आप उसको कॉपी करके अपने सिस्टम में रख लो। तो एप्लीकेशन के मेल्स यू कांट डिलीट इट, राइट? कब 2 साल के बाद, 4 साल के बाद जरूरत पड़ जाता है वो मेल को, ओके? तो इन दैट केस व्हाट यू विल डू, तो इस केस में क्या होता है, हम एक पीएसटी फाइल बनाते हैं। पीएसटी मीन्स पर्सनल स्टोरेज टेबल, so you can create a pst.pst file in your mail in your system dot pst, and you start downloading the mail from ost to pst. Then 1 GB mail is downloaded in a pst. Now your ost exchange space is free. Now you are receiving a mail from the sites. Now, so PST is a personal storage table. Now this mail is stored in your personal laptop. You can transfer this file to anyone. You can transfer this PST to Sam, to Roy. Suppose you left the organization and Sam want to access your mail, then Sam ask IT team, please convert the Tom OST file into PST and transfer to me. तो क्या करेगा IT पर्सन, OST को एक्सपोर्ट कर देगा PST में और कॉपी कर देगा PST में, एंड द PST Sam, तो टॉम का जितना भी मेल था वो सब पीएसटी में आ गया और पीएसटी ट्रांसफर हो गया सैम। ओएस, इज इट क्लियर? वी कांट ट्रांसफर ओएसटी, वी कैन ओनली ट्रांसफर पीएसटी। डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. इज इट क्लियर? Yes. समझ में आया बात? Yes. ना, और भी है, अभी बहुत कहानी बाकी है ओएसटी पीएसटी का, रुको अभी खत्म नहीं हुआ। नाउ so this is for exchange and office 365. Now in some of the organization there is a POP. पढ़ाया होगा आप लोगों का POP, अभी POP मत पूछना मेरे से कोई कि POP क्या होता है, राइट? POP, IMAP, SMTP ये सब आप लोगों को पढ़ाया है, POP 3, right? So in some of the organization there is a no exchange, no office 365, they are working on the older technology called a POP 3. So in POP 3 there is a no exchange, so there is a no OST. There is a server, there is a mail exchange server, but in that case they will create a directly PST to your system, and your mail will directly came to your PST. So if in POP, in case you are delete your PST, no mail is recovered, आपके मेल्स रिकवर्ड नहीं होंगे। But if there is an OST and if you delete your file and you configured in another laptop, suppose your laptop is damaged, and if there is an OST only, suppose Roy
Roy do not have a PST and his mailbox is suppose 5 GB, then Roy can directly log in to his another laptop. No need to take a mail backup. All OST file is visible in the new laptop because the all mails are on the exchange also. तो मेल बैकअप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका ऑलरेडी मेल एक्सचेंज पे है। जैसे आप कनेक्ट करोगे एक्सचेंज से आपको मेल आपके लैपटॉप में डाउनलोड हो जाएगा। बट अगर आपने पीएसटी बना लिया है तो एक्सचेंज से वो मेल डाउनलोड हो जाता है पीएसटी में, फिर वो एक्सचेंज पे वो मेल नहीं रहती। So what happened in that case? If you delete the PST, then your previous mail will come. Do you understand it? समझ में आया बात? Yes, sir. Okay. We can take a backup of a PST, but we can't take a backup of a OST. Means no need to take a backup also because it is already in a exchange. If we take a if we log in on another computer, then it is automatically downloaded. All OST mail will downloaded in your system. So OST is called a open storage table. Write the difference. आप लोगों को लिखवाना पसंद था ना, लिखिए। I will dictate. यह समझ में आ गया? यह समझ में आ गया? No need to dictation. बोलिए। Yes, जैसे समझ में आ बोलेंगे गया। आप। किस किस को नोट्स चाहिए? इतना अच्छे से समझाने के बाद भी नोट्स चाहिए? नो सर। मैंने बताया तभी आप लोगों ने लिख लिया होगा, राइट? नाउ और भी एक चीज है ओएसटी पीएसटी में, वी कांट ओएसटी कभी करप्ट नहीं होती आप, राइट? इफ ओएसटी इज करप्टेड देन यू कैन क्रिएट अनदर आउटलुक प्रोफाइल। मीन्स जो भी आप लोगों को आउटलुक प्रोफाइल बनाने के लिए सिखाया था वो प्रोफाइल को छोड़ दो, दूसरा फाइल बना लो, सारा मेल ओएसटी में डाउनलोड हो जाएगा। जो भी मेल ओएसटी में है आपके लैपटॉप में कुछ भी होने दो, आपका मेल कहीं नहीं जाएगा, वो एक्सचेंज पे रहे। हाँ, अगर आपने डिलीट कर दिया है तो डिलीट हो जाएगा। अगर आपने डिलीट नहीं किया है, इफ you haven't deleted the mail, then it will keep as it is in the exchange. Just you need to log in. OST file. Yeah, what? We can repair OST file. Yes, or not. we can repair OST file, but no need to repair. No, OST file no need to repair. If you want to repair OST file, then also you can go there, scan PST, but no need to repair OST because it will take a huge time also and it is unnecessary work. You just create a new profile. So if interviewer asks you, But it is possible to sir recover sir. PST you can repair. OST I had never repaired. Okay. In my experience, in my life, I have never repaired OST. And in theory also, it is said that no need to repair OST. अगर आपको लगता है करना है तो आप करके देखो. There is one application called Scan PST. So Scan PST is used for repairing of a PST. Okay. और ओएसटी को रिपेयर करना क्यों है? जब हमें ओएसटी के सारे मेल एज इट इज मिल जा रहे हैं तो इज इट नेसेसरी टू रिपेयर इट?
जब आपको नया चीज मिल रहा है तो आप पुराने चीज को रिपेयर क्यों करोगे? और ओएसटी को रिपेयर करते भी नहीं है, राइट? ओनली वी रिपेयर पीएसटी। और अगर पीएसटी 50 जीबी से ज्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगा। सो कीप इन माइंड, हमें पीएसटी की साइज 40 जीबी 50 जीबी के रेंज में जैसे ही हो किसी भी यूजर को, तो सजेस्ट हिम कि सर दूसरा पीएसटी बना लो। डू यू अंडरस्टैंड? Now I am giving you the path of a scan PST. पूछा, ये एक scan PST.exe, ये आपके आउटलुक में ही रहता है, ठीक है? जब आप आउटलुक करोगे, so this is used to repair your PST file. If your PST file is corrupt, then it is used to repair the PST. So the location is C, program file, program files, right? In that program files, you will get a Microsoft. And in that Microsoft, you will get a Office 16, 15, or 13. If you are an older Microsoft, then you will get a 10 also. And there is a scan PST in this folder, Office 60. You have to search it. There was a lots of file, and there you will find a scan PST .exe. This is the by default location of your scan PST. Okay. Now, in Exchange, I have explained you. I explained you POP also. Now come to the Office 360. In Office 365, no need to make a PST. Okay. In Office 365, all your mails are on a cloud. If your mailbox is full, then it is archived online. The Exchange manager who is managing the Exchange, it will archive it online. So it is online archive. So no need to create PST manually in Office 360. Understand? समझ में आया बात आप लोगों को? Yes, sir. सर वन क्वेश्चन सर. पूछिए. सर हमें sir, it is taught to us that like Tarun sir taught us, like if your inbox will be full in your Outlook and you are stop receiving the email, so at that time what you can do, you can say either delete the email from the inbox or you can completely archive those files, and then your Outlook will be start downloading the mail from the Exchange server. Okay, so where you will archive? Archive means, yeah, that is correct. But where you will archive? Sir, on our local disk only, like hard disk. So in wait. So in local disk, what is the file extension? .pst, sir. Yes, that is the .pst. That's why I'm saying now you have to download that file from OST to PST. There are different methods to copying a file from OST to PST. One is archive. Another one is directly
copy all the mail and paste it on a PST. Okay, copy paste. Now, third is export. You can export, you can take a profile backup, means backup of all the mail you can export and make it, it will created a PST folder, means PST file, and save all the mail in a PST. Okay. So archiving is also a copying of file only. So there are two type of archiving. One is auto archive and one manual archive. So you have to, while archiving a mail, so you have to provide a PST folder path, and you have to select a date for what date you want to move a mail from a PST. अगर आपको आज मान लो 18 मई है, मुझे 18 मई तक के मेल सारे मूव करने PST में, then I can select 18th of May. तो 18th मई के पहले वाले सारे मेल आर्काइव हो जाएंगे और वो जाएंगे कहाँ? वो कॉपी पेस्ट होगा PST. Okay, that is right. You can archive it. Archive is also an option to copy paste it. So what happened? The advantage of archiving provide you one benefit. Suppose there is in inbox, if you have a multiple folder, so if you archive your mail in a PST, then no need to create a multiple file. It automatically create that subfolder in a PST. जैसा जैसा आपके फोल्डर्स रहेंगे OST में, वैसे वैसे सेम फोल्डर PST में क्रिएट हो जाएगा. तो आर्काइव करने से ये बेनिफिट है. नहीं तो अगर आप जैसे कॉपी पेस्ट करोगे, देन यू नीड टू मेक अ फोल्डर इन अ PST, इन विच फोल्डर यू वांट टू कॉपी. जैसे आपका इनबॉक्स का है, जैसे सेंट आइटम है, जैसे आपका डिलीट आइटम है, जैसे आपने रूल्स लगाया है, HR का मेल है, मैनेजर का मेल है, डायरेक्टर का मेल है, तो वो सब फोल्डर दोबारा की जरूरत नहीं पड़ेगी PST में जब आप आर्काइव करोगे. सो आर्काइव इज अ बेस्ट ऑप्शन, बट यू शुड कॉपिंग द मेल इन अ PST only. डू यू अंडरस्टैंड? समझ में आया बात? Yes, sir. Yes, sir. नो. और कुछ पूछना है? But sir, this OST will be created when we will configure our profile with using the IMAP and SMTP protocol, correct? Then only it will be created. Yes, IMAP is also older one. POP is also older one. Now the IMAP is not using. They are using Exchange and Office 365. In beginning, I have told you. Yes, So, sir. So yes, yes. Tell me. So sir, in that case, when we create the profile in our Outlook for manual, two configuration type used to be there, automatic and manual. So like, like we learned the manual part where we have to provide all the details like POP or IMAP and SMTP. So in our exchange one, we have to go with the automatic part. You are saying? Yes. In Exchange, no need to configure anything. Okay. In organization, you have to just open your Outlook. They will ask you. You need to just, but the system will be in Office Network. अगर सिस्टम ऑफिस नेटवर्क में है तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, इवन पासवर्ड भी नहीं डालना पड़ता है कई बार, सिर्फ नेक्स्ट 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 फिनिश, और आपका मेल बॉक्स कॉन्फ़िगर हो जाता है. ईमेल आईडी भी नहीं डालना पड़ता है. क्यों?
क्योंकि जब कंपनी में डोमेन में होता है लैपटॉप, सो लैपटॉप और आपका प्रोफाइल ही है, तो उसमें आपका ऑलरेडी ईमेल आईडी पे ही अकाउंट बना है, ईमेल आईडी पे ही आपने सिस्टम लॉगिन किया है। तो जब भी आप आउटलुक को रन करोगे तो आपको कुछ भी नहीं पूछेगा। लेट मी शो यू सम इमेजेस। मैं अभी कॉन्फ़िगर करके तो नहीं दिखा सकता, बट आई विल शो यू द इमेजेस स्टेप बाय स्टेप, कैसे कैसे स्टेप्स आता है। ये देखो, ये ऑफिस 365 का है। This one is Office 365. You just need to put a mail ID. But if you are in Office network, to put a mail ID also, it automatically triggered your mail ID like this. It automatically triggered your mail ID. You just need to connect it. कुछ नहीं करना है, सिंपल कनेक्ट पे क्लिक करना है और वो कनेक्ट हो जाए। If you are not using Office 365, then you will get this pop-up. To be sure. Yeah, this pop-up. Yeah, better one, this one. You will see this pop-up. Once you will open Outlook, you will get this pop-up. You need to click on the next option. After clicking a next option, you will get this pop-up. Wait, let me show you. Yeah, this one. उसके बाद आपका ये पॉपअप आएगा और आपको इसमें कुछ भी नहीं डालना है, ये भी नहीं पूछेगा वो, सिंपली वो एक ही बार में सारा ट्रिगर कर लेगा। ईमेल अकाउंट ले लेगा, सब कुछ ले लेगा वो, और यू नीड टू जस्ट क्लिक ऑन द नेक्स्ट। और जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, आफ्टर दैट यू विल गेट दिस पॉपअप। Hello, sir. One question. Yes, yes. After joining the company, do I have to log in the same PC, same email ID onto my personal PC also, sir? No, you don't use a same email ID on your personal machine. If the organization giving you the authority, in that case only you can log in. I will come to that part also. Wait, give me a minute. Let me show you that pop-up. After that, which pop-up will come? Wait, where is it?